Prime Minister Narendra Modi's mega push for revival of centers of Hindu faith continued today. He visited Kedarnath and Badrinath shrines and sent out a clear message that there was a need now to shed a colonial mindset and take pride in the country's Hindu civilization. Launching a scathing attack on previous regimes, the Prime Minister highlighted that centers of spiritual importance have long been neglected in the country and blamed this neglect on a heen bhavna, or a feeling of inferiority that was purposely thrust on people of the country, especially towards how they felt for their centers of faith. Citing the examples of Kashi Vishwanath Temple, Ujjain and Ayodhya, where major reconstruction work has been carried out in recent years, the Prime Minister said his government has restored the glory of these centers, something that past governments either failed to do or they did not want to do at all. लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। So was there really a heen bhavna or a feeling of inferiority thrust upon the Hindu population of India? And if yes, was there politics behind it? Joining us now on the debate, analyzing spokesperson of the BJP, Professor Pawan Sinha, spiritual scholar, Siddhartha Das, political analyst. My first question is to you, Dushyant Nagar, also political analyst. क्यों थी ये हीन भावना? बिल्कुल ऐसी कोई हीन भावना नहीं थी। अब से पूर्व में, श्री मोदी जी से पूर्व में जो देश के लीडर्स हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, सबने अपने धार्मिक कार्यों का निर्वहन बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ किया। बस अंतर इतना है, आज लाइव प्रसारण होने की उपलब्धता है। जैसे प्रत्येक कुंभ के अवसर आए हैं तो भारत का कोई भी प्रधानमंत्री है वो गए हैं। श्री राजीव गांधी जी ने प्रमुख धार्मिक स्थलों का, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बालाजी का उन्होंने धार्मिक यात्राएं करी हैं जिसके चित्र मौजूद हैं। बट उसका जीर्णोद्धार करना, जी बिल्कुल, या फिर वहां पर कॉरिडोर बनाना, जीर्णोद्धार, बनारस में काशी विश्वनाथ की क्या हालत थी, ये तो पूरी दुनिया जानती है। वहां पर जो लोग जाते हैं, आप भी गए होंगे। देखिए, पीडब्ल्यूडी हर राज्य में है, उसके निर्माण करने की इकाई है, उसी के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री जी अब उसको अपनी तरफ सारे कार्यों को क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है भाई, देश के प्रधानमंत्री मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पीडब्ल्यूडी ने किया, मतलब मोदी जी ने नहीं किया, योगी जी ने चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट ने किया। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि रामायण जो सीरियल बना वो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने बनाया, उसका प्रसारण करवाया। महाभारत का अप्रूवल राजीव जी ने किया, उसका प्रसारण कांग्रेस पार्टी ने करवाया। देश के घर घर तक राम कृष्ण की कथाओं का, उनकी लीलाओं का प्रचार प्रसारण, उनके हमारे दैनिक जीवन में जो हमने ढाला, सीरियल तो ठीक है, बट जो एक्चुअल मंदिर है जहां श्री राम बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने किया। बरसों की गुलामी से भारत को आजाद होने के बाद में जो देश में राष्ट्रवाद का गठन किया, जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया, शिक्षा में
हमारे पूर्वजों का, अरे सर, आप हमारे महान संस्कृति का। एक चीज की बात कीजिए ना, आपने कहा कि कई लागू मंदिरों कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने करवाया। सरकार ने नाम बताइए, 3 प्रोजेक्ट बताइए जी। मैंने तब से मैं सारे नाम ही बता रहा हूं। आपने अभी तक रामानंद सागर की रामायण बताई है, आपने बी.आर. चोपड़ा की बताया है। वो शिक्षाएं जन जन तक पहुंची किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने की। अच्छा, देश में कॉरिडोर बनाने से हो गया। रामायण देखिए, और मैं आपको सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, रामायण की एक चौपाई बताना चाहता हूं। हाँ। राम राज्य किसको कहते हैं? मणिमाणिक महंगे हुए, सस्ते तृण और नाज। आज सोने पर 3% जीएसटी है और चपाती और पराठे पर 5 और 18%। कहां से कहां चले गए? ये राजा का, दूसरी ही ये सरकार का दायित्व है। अब आप लोगों को भटका रहे, ये नहीं बता रहे नहीं रहे हैं पराठा है। एनीवे, देश में सही राम राज्य की स्थापना अगर की, आप किधर से शुरू हुए, किधर चले गए दुष्यंत जी? हम ये कॉरिडोर बना दिया, विश्वनाथ से फलाना हो गया, उसका मोदी जी क्रेडिट लेने लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ की, आप पराठे की कैसे बात कर क्रेडिट रहे ले हैं? सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे राज्य सरकारों ने विकास कार्य किया है। मैं प्रोफेसर सिन्हा मोदी जी आके बोल देते थे मैंने किया, भैया आपने नहीं किया है। प्रोफेसर सिन्हा, ये बताइए कि पिछले कुछ सालों में ये बार बार कहा जा रहा है कि मार्केटिंग हो रही है जबरदस्त, अभी काम पहले भी किया गया है, आप अग्री करते हैं? डू यू अग्री कि काम पहले भी हुआ है, प्रोजेक्ट पहले भी हुए हैं? प्रोफेसर सिन्हा। No, I don't agree. There's honorable friend of mine who was just speaking in favor of the work which were done by the Congress, but he could make one single road, any one single train, and one single reconstruction, any Jeerodhar, any corridor, or anything like that. Even in foreign countries, the temples have been built, and they name any one of them. And I am very much sure that you would agree to this, that the earlier ministers and prime minister also, they used to visit the dargah more than the temple. So whenever it was the time of Hinduism, they always used to say that it's a personal matter, but when it was time of dargah, so or Sama, or the Rosa system, so they always used to say that doing it for our Muslims. I don't mind that if they are doing it for their Muslim brothers, but at the same time, Hindus too are their brothers, and so they should have done for Hindus also, and there would have no problem. But the issue is that they never took care of those Hindus, and that they, at times they felt shame for them. Hindus, they felt shame. We have the tilak or the shame, have the mala result and all. So naturally, after 2014, the growth of Hinduism tremendous, and I appreciate that. Okay, so from being embarrassed, Siddhartha Das, now there is an open acknowledgement that you should be proud of your culture. In fact, the Prime Minister also said that Indian culture and civilization is showing the way to the world. It's not just something that you should be proud of. You should let the world see its richness. See, the world knew India's art and culture richness from Swami Vivekananda, who has done it 100 years back. Making a statement that nobody has ever done it, I think I don't accept such a statement. And I would like to ask few questions. The past government, among the past government, there was 5 years tenure of NDA as well. Do BJP consider that 5 years as a failed tenure from their side? Second of all, I would like to ask one more question. When you talk about the Hindu pride, Hindu culture, the basis, one of the most important aspects of it is the river Ganga. We all consider as the most pure and pious river. And this government has said in 2014 that it will change it. There was a project, Namami Ganga. Sir, can we talk about the issue at hand? We can have a separate debate on Namami Gange. Can we talk about the issue at hand? We're talking specifically about temple revival. Spiritual part of this vision. One more thing about the temples, if you consider, in West Bengal, I belong to the state of West Bengal. There is one place, Ganga Sagar, and it
one of the most important places in West Bengal where millions of people visit every year. I do not see the central government in the last 9 years has done anything for Ganga Sagar. Okay, so you want something to be done for Ganga Sagar also. Oh, you can ask the state government actually, but koi baat nahi. No. Why are you doing something for Ganga Sagar? State government has done the effort. Okay, state government has done the effort, but you said nothing has changed in the last 5 years. Nothing has changed from the central government side. Nothing was done. It Right. was the state government who has done it. Okay, so state has done enough. Now you want the centre also to pitch in. Anila Singh. My Ram to everyone, and I think today again is a proud moment of each and every Sanatani or any of the verticals or of any person who worships our Devi and Devta. The way proper respect is given to the to a religion of the majority population living in our country is something, which we have never seen since our country got independence. Majority of the prime ministers, they wore the mask of secularism and they stood with all those people who wanted to say that if you are going to give due respect to the religion of majority population, then you will not be the secular. But our prime minister, honorable prime minister of this country, Mr. Narendra Modi ji, No, but Dushyant Nagar is saying that all the past prime ministers were very proud Hindus. They also used to practice Hinduism, it's just that they didn't do it in front of the camera. What about Pandit Nehru used to do it, Sardar Patel used to do it, they just didn't do it for the camera. No, we very well know that what type of attitude Mr. Jawaharlal Nehru had, what type of attitude Mrs. Indira Gandhi had. We know it very. No, let me complete here. Padmaja, can I complete? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रचार करते हैं। ऐसा मत बोलिए आप जिस महाकाल मंदिर की बात कर रहे हैं उस महाकाल मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने की। श्री कमलनाथ जी की सरकार ने उसका संकल्प लिया और मैं आपको बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या जी का अकेला दिव्य और भव्य मंदिर बनाया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और सुनिए आप, श्रीलंका के अंदर माता जानकी जी का विराट और विशाल मंदिर हमारे नेता लोकप्रिय नेता श्री कमलनाथ जी ने बनवाया है। लेकिन कांग्रेस के नेता कैमरा लेकर नहीं जाते। आप लोग कैमरा पहले जाता है, बाद में आप जाते हैं, आपके नेता जाते हैं। अरे ये क्या बात है? अगर कोई प्रचार प्रसार नहीं करता तो उसके कार्य की कोई सराहना नहीं होगी या उसके कार्यों का कोई। Let's ask Professor Pawan Sinha. Professor Sinha, you made a very serious charge. You said that पहले सभ्यता और संस्कृति को और पूर्व के जो नेता हैं जिन्होंने इतना योगदान किया है आप उस सबको मिटा देना चाहते हैं। Professor Sinha, you said that pehle there was a sense of embarrassment about showing your religious identity. But which of our politicians or prime ministers did that? Because the Congress is arguing that this is an unfair allegation. Nobody was embarrassed. No, I'm not just talking about prime ministers. I would like to draw your attention towards a statement of Pandit Jawaharlal Nehru ji. I would like to draw your attention towards the statement of Honorable Rajiv Gandhi ji and many more ministers. And one thing I would like to draw your attention towards that there is always an impact on the society. What the leadership does, society is always influenced by that. So at that time, the situation was such that the ministers, the bureaucrats, they actually were hiding their Hindu identity, and because of which there were many schools, there were many academic discussions, there were many people of intelligentsia who never liked to discuss about Hinduism. I cannot forget that particular day, and I am intrigued to remember that when our Ramji system, our Ramji's identity, everything was called imagination. And now the people, since people have changed, people have moved away. Now they have started creating their narrative. But there used to be a time when they said that the affidavit was written. बताइए दुष्यंत जी, वो लोग भूलेंगे नहीं। आ जाते हैं भाई बड़ी बात है ना, एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया
वो पुरातत्व विभाग ने दिया, केंद्र सरकार ने उसको वापस लिया। आप लोग ऐसी बात करेंगे किसी कांग्रेस के लीडर ने? मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं आपको, आप एक बयान दे दीजिए जिन्होंने धर्म के आस्था के खिलाफ एक बयान दिया हो। लेकिन क्या है कि एक राजनीतिक दल धार्मिक भावनाओं पर राजनीति नहीं करता, वो लोग बोलते नहीं, प्रचार प्रसार नहीं करते, तो आप कुछ भी बोलते हैं न्यूज चैनल्स पे। अरे भाई थोड़ा तो सोचिए, जस्टिस की बात करिए, न्याय की बात करिए। प्रोफेसर सिन्हा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ भी बोल रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, किसी कांग्रेस के लीडर ने अगर कहा हो, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया हो, मुझे आप व्यक्ति का नाम बता दीजिए। Where rosary is permitted, there are still so many schools where Kalaba is not permitted. Where कांग्रेस पार्टी ने नवोदय स्कूल बनाए, शिक्षा के केंद्र बनाए, जिनसे आज IAS बन गए। अरे सर, बट स्कूल और मंदिर कोई एक्सक्लूसिव थोड़ी ना है। सिन्हा जी, आप उस राजनीतिक दल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं देश के अंदर स्कूल भी होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए। भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अक्षुण्णता के लिए राजीव गांधी आपके साथ बैठे हैं तो इसका फायदा उठा रहे हैं। नागेश साहब सुन लीजिए, आप तो थोड़ा डिसेंट डिबेट करने वालों में से है, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था तो नेहरू जी का क्या एटीट्यूड था साहब? क्या एटीट्यूड था? बारम्बार, और आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम किसी भी विषय पर आपके किसी भी नेता ने कभी कोई टिप्पणी नहीं करी। राम सेतु पर क्या टिप्पणी करी थी आपके शशि थरूर जी ने? आप भूल गए? आपके बड़े बड़े नेता जो है कोर्ट में खड़े होकर पूर्ण प्रयास करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं कि मंदिर जो है वो बन ना पाए। देखिए ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। नागर साहब, आप लोगों ने बारम्बार जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, बिल्कुल नहीं माफ करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जब से केंद्र में आई है, सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारे देश की सुदृढ़ हो रही है, कांग्रेस की बेचैनी जो है बढ़ती चली जा रही है। ये देश की जनता तय करती है साहब, ये देश की जनता तय करती है। देश की जनता तय करती है कि वोट कर किसको सरकार में लेकर आएगी और किसको घर में बैठा कर। जस्ट अ सेकेंड फॉर अ चेंज, Sir, for a change, can we just stick to the issue at hand? The point is, whenever it is brought up that yes, there's inflation, yes, that is an issue that has to be addressed. Whenever it is brought up that, we also need to look at if there are any crimes being conducted in the name of religion, that also needs to be addressed. But none of this is exclusive of trying to revive and preserve your own culture, which at the end of the day will remain intrinsic to your country. To say that a temple cannot be built till the time that all hospitals are built is completely antithetical to the very idea of how civilizations are to be preserved. Thanks very much, all gentlemen, Anila Singh, for joining me.